Assalamu alaikum, respectable sir and lovely student. Today I appear in front of you and make a presentation on trafficking of women. Before trafficking of women, every country focuses on specific human rights. Then the trafficking of women is a problem for every place on the planet. Now, what is trafficking of women? The trafficking of women basically is the international commercial activities in which force and fraud are used to transfer of women across international boundaries for economic gain. What are the causes of trafficking of women? There are many causes of trafficking of women, has a poverty, lack of education, political instability, women freedom over laws of women rights, co-education, co-relation. According to these causes, the trafficking of women in India 40 million victims, in China 3.2 million victims, in Pakistan 2.1 million victims according to our report. Stakeholder of trafficking of women, यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन की वजह से किन को नुकसान होता है, ये किस पर असरअंदाज होती है? To your family members, your country, the people who trade and utilize the goods and services, owner, manager and employee and other etc. Basically, trafficking of women is the world's fastest growing criminal industry. Trafficking of women was coined during the second layer of trafficking of women in 1918. Then 127 countries are included in trafficking of women out of 134, यानी कि 134 कंट्री में से 127 कंट्री जो है वो असल में इन 1918 में इंक्लूड थी ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन के लिए. Then there are many countries are decided to create a one organization, the UNO. The United States basically create the one organization UNO, United Nations Organization. United Nations Organization basically play an important role for human rights. The United Nations Organization was coined United States in 1942. Then the UNO are created many laws according to trafficking of women has the woman lives up to her full potential, free from violence, free from slavery, free from discrimination, to be educated, to own property, to vote and other etc. Now we discuss trafficking of women in Pakistan. Because I live in Pakistan, now I discuss trafficking of women in Pakistan. We already discussed what is trafficking of women. Then again for you, trafficking of women basically involves to use fraud and force. Generally, to be a one report a previous year 2019, 90,954 victims of trafficking of women. Then next year 2020, the 32,000 victims of trafficking of women in Pakistan. कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन में इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग होने की बजाय इंक्रीजिंग ही हो रही है. रिपोर्ट आपके सामने पेश की है, उसके मुताबिक 2019 में और 2020 में काफी फर्क, यानी कि तकरीबन 11-12,000 का यानी कि उसमें फर्क आया, उसमें ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन में इंक्रीजिंग हुई है. Now the Pakistan create many law about trafficking of women, has a PTPA, TVPA, Act of 84-84, Act of 333, 334, 335 and so on and so on. Basically I discuss only one act in a pair of you, Act of 509. 509 जो एक्ट है ये असल में अभी तक पाकिस्तान में रुआ है, अभी तक गर्ल्स इसे अप्लाई कर रही हैं. अब 509 एक्ट क्या है? 509 एक्ट असल में हरासमेंट के मुतालिक है, और इस एक्ट के इसमें दो पार्ट्स हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एक्ट ऑफ 509, सब एक्ट ऑफ 1 एंड सब एक्ट ऑफ 2. सब एक्ट ऑफ 1 क्या है? सब एक्ट ऑफ 1 असल में अप्लाई होता है पब्लिक प्लेस पर, यानी कुछ लोग होते हैं, कुछ मिल्लत के नौजवान हैं, बहुत ही काबिल अजीज है हमारे लिए, वो क्या करते हैं, वो पब्लिक प्लेस पर जेस्टर देते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, या कंडीशन या माहौल कुछ ऐसा पैदा कर देते हैं हरासमेंट वाला, तब
सब एक्ट ऑफ 1 उन पर अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू सब एक्ट ऑफ 1 जो उनकी पनिशमेंट है वो 3 से 25 ईयर है, और जो जुर्माना आयद होगा वो 1 से 5 मिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। अलावा अगर किसी गर्ल पर हरासमेंट होती है इन पब्लिक प्लेस पर, देन शी विल गो टू मजिस्ट्रेट। अव्वल दर्जे का मजिस्ट्रेट होगा, वो उसके पास जाएगी, अपना बयान देगी, वहां पर अप्लाई करेगी। देन 40 डे के अंदर अंदर उस मुजरिम को पेश किया जाएगा, उसके बयान होंगे, और अकॉर्डिंग टू एक्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के मुताबिक जो मजिस्ट्रेट होगा वो उस पर जुर्माना आयद करेगा, उसे सजा देगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मजिस्ट्रेट वो दोनों पनिशमेंट अप्लाई कर सकता है, वो जुर्माना भी आयद कर सकता है और आपको कुछ साल की सजा भी दे सकता है। देन हैज अ सब एक्ट ऑफ 2। सब एक्ट ऑफ 2 जो है वो असल में वर्क प्लेस पर, यानी जहां पर गर्ल्स काम करती है वहां पर जो आपके मैनेजर होते हैं, जो आपके ओनर होते हैं, अगर वो आपके साथ हरासमेंट करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी पता कर देते हैं हरासमेंट वाली, जो गर्ल्स होगी वो असल में मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, जो अव्वल दर्जे का होगा वहां पर बयान होगा, उसका 40 डे के अंदर अंदर मुजरिम को पेश किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एक्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के मुताबिक उससे सजा दी जाएगी। दोनों सजाएं भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, उससे पनिशमेंट भी हो सकती है। और यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूं आपके साथ कि हमेशा ये नहीं होता कि ऑलवेज द गर्ल्स आर राइट, वो ठीक ही हो, कभी वो रॉन्ग भी होती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा द बॉयज ऑलवेज राइट है, हमेशा वो ठीक हो, और ये भी नहीं होता कि हमेशा वो गलत भी हो, क्योंकि कुछ गर्ल्स होती हैं जो असल में एक्ट ऑफ 509 को कंप्लीटली यूज करती हैं, हैज टू अर्न मनी, टू रिवेंज, टू फैमिली। देन जो बॉयज होता है फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे काबिल जमानत भी मिल सकती है, काबिल राजीनामा भी हो सकता है। इन 40 डे के अंदर आप इन दोनों रूल को अप्लाई कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना कोई भी पुलिस वाला उस बॉयज को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये था असल जो अभी तक हरासमेंट के मुतालिक पाकिस्तान में रूल अप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं कि प्रिंसिपल कौन कौन से बनाए गए के लिए। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब प्रिंसिपल क्या है? टू राइट इक्वलिटी, टू राइट लाइफ, टू राइट वर्क, टू राइट प्राइवेसी, नो स्लेवरी, डोंट डिस्क्रिमिनेट, एंड वी ऑल आर बोर्न फ्री एंड अदर इटीसी। अब ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? टू इंक्रीज एजुकेशन, टू चेंज आवर नेशन लॉ टू बी स्ट्रॉन्ग, टू डिक्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टू डिक्रीज पॉवर्टी, we should follow our religion, always tell your family member and your friend where you are going and when you will return. According to me, this point to decrease co-education and to decrease co-relation. Our video the last point is implement for solution, है कि जो implement the solution है, यानी जो हमने अभी जो आपके सामने बयान किए हैं कि हम ओवरकम इसे कैसे कर सकते हैं, वो असल में क्या है, वो सोल्यूशन है। हम इसे किस तरह अप्लाई करें और हम ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन से बच सकते हैं। इन स्कूल, इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज शुड बी स्टार्टेड। वी पे फॉर स्कूल फी एंड गिव हर एवरीथिंग। नाउ देयर शुड आल्सो बी वन पीरियड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। नाउ वी शुड क्रिएट an anti-trafficking organization. The anti-trafficking organization was created, then we should to be investment to create a strong law. The last point of implement the solution, we should make the all laws accessible to the people. तो जिस स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। I try my best to solve your question, to solve your problem. चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।